ये बहुत गैर जिम्मेवाराना बयान है और इतिहास के तथ्यों को नकारता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किरण रिजिजू और कोई भी अन्य मंत्री हो, उनको इस तरह के बयान देने पर अंकुश लगाना चाहिए। ये कोई राजनीति की बात नहीं। वास्तविकता ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और आज़ादी के संग्राम में अग्रिम पंक्ति के नेता थे। भारत का जब आज़ादी की बात आई, उसके साथ साथ हिंदुस्तान का बंटवारा भी, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो पास किया था, उसके तहत वो प्रक्रिया तय थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो किस तरह से शामिल होंगी भारत के अंदर या पाकिस्तान के। इस सारे प्रोसेस को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स देखती थी, जो सीधा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल जी के उसमें थी, चार्ज में सामूहिक निर्णय होते थे। और 1947 में ही जून महीने के आसपास एक नया डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स बनाया गया कि जो 562 प्रिंसली स्टेट का भारत में विलय था वो कैसे किया जाए। कोई ऐसा कागज़ नहीं है, कोई ऐसा बयान नहीं है जिस पे इसका जिक्र भी हो कि कोई भी विलंब या जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से या सरदार पटेल के किसी फैसले से हुआ। बिल्कुल गलत है। महाराजा हरि सिंह स्वयं ही पूरा मन नहीं बना पाए थे जब तक पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को लेके, उसको इन्होंने उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर पर कबायली हमला हुआ, उसमें पाकिस्तान की फ़ौज के लोग शामिल थे। तब महाराजा ने और वहाँ के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार से इस बात का आग्रह किया कि वो विलय को स्वीकार करें। उसका भी एक कारण था कि भारत की सेना तभी भेजी जा सकती थी जब जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, जो तय हुआ था कि जो राज्य प्रिंसली स्टेट उस पर हस्ताक्षर करेंगे और भारत की कैबिनेट उसको स्वीकार करेगी, तभी हमारी फ़ौज जा सकती थी। ये उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भी ये शर्त लगाई थी और वो रातों रात ही हो गया था। ये तथ्य पूरे मिलते हैं सारे सरकारी कागज़ों में कि जैसे वो पत्र आया, लेके आए, एयरपोर्ट पर ही सरदार पटेल स्वयं मौजूद थे, निर्णय हो गए थे। तो किरण रिजिजू को या तो इतिहास का ज्ञान नहीं है, अगर नहीं है वो भी चिंता का विषय है कि केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर को इतनी संवेदनशील विषय पे जानकारी नहीं है, और अगर नहीं है तो जानकारी प्राप्त करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक लंबे समय तक अंग्रेज़ों की जेल में कैद रहे, एक समय अलग अलग अवसर पर। सबसे ज़्यादा समय अंग्रेज़ों की जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। तो आज ऐसी बातें कहा जाना भी लोगों को गुमराह करना है, इतिहास का भी अपमान करना है और एक बड़ी शख्सियत को विवाद में डालना और उनका जो योगदान है उसको नगण्य करना, ये अच्छी बात नहीं। So how do you see this statement of Indian Law Minister Mr. Kiren Rijiju? He said that due to the wrongdoings of Pandit Jawaharlal Nehru, that Jammu Kashmir has to face the consequences now, and Prime Minister Modi is resolving the issues. I can only pity the mental bankruptcy of Minister Rijiju. He has no understanding of history. There is no proof, there is no evidence. I would say that Prime Minister
should rein in the ministers from making such untrue, false, and irresponsible statements as has been made in this regard. The account of that period in 1947 has been very carefully documented, not by one, but more than one person who were directly associated with the process of the merger of princely states. One person being the secretary of the Ministry of States, which later also a new department was created, Department of States in 1947, for the integration of the or merger of 562 princely states in India. That was Mr. V.P. Menon, who worked directly on this and reported to the then Home Minister, who was also the Deputy Prime Minister, Sardar Vallabhbhai Patel. So it was not Nehru as Prime Minister, it was the Home Ministry which was given the responsibility to undertake this onerous task, a national mission, and to supervise the processes as per the legal requirements which flow out of the Independence of India Act which the British Parliament had passed. And the states, princely states, which wanted to merge, had to sign that instrument of accession. There was no delay. It was Maharaja Hari Singh who was dithering for a few months and is then Prime Minister, not subsequently when a request or appeal was made to the Government of India after Pakistan had violated the standstill agreement and invaded Jammu and Kashmir. And when that request reached and the instrument of accession, as per the requirement which was clearly and very firmly put forward by the then Viceroy, that the Indian Army can only go after the instrument of accession has been signed and accepted. There was no delay. Forget about months or a month's delay. There was not a delay even of a day. The same day when the instrument of accession was received by the Department of States, by the Home Ministry, the same day it was accepted by the Union Cabinet. So I rubbish completely what Minister Rijiju has said. Jawaharlal Nehru was a front-ranking leader of the freedom struggle who spent the maximum time in British prison, maybe more than 11 years. To insult his contribution and memory is unacceptable. Minister should apologize and withdraw such statements. It does not behove a cabinet minister to deliberately mislead and undertake a propaganda which is contradicted by documented facts of history. सो मेरा एक आखिरी सवाल आपसे बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि देश की राजधानी में यूनिवर्सिटी की मीटिंग चल रही है, आप विपक्ष के बड़े नेता हैं और आपका सब्जेक्ट भी विदेश मंत्रालय विदेश मामलों को है। विदेश मंत्री ने वहाँ पर कहा कि आज ज़रूरत है एक ग्लोबल कॉपरेशन की, सब कंट्रीज़ की वर्ल्ड लेवल पर, ताकि इस ग्लोबल टेररिज्म से निपटा जाए। और क्योंकि सोशल मीडिया और नई टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट टूल बन चुके हैं मिलिटेंट्स के, ये बात उन्होंने यूनिवर्सिटी की मीटिंग के दौरान आज की है। आप क्या सोचते हैं? भारत दशकों से ही प्रयासरत है, पहली बार नहीं भारत ने बात उठाई। मुझे याद है हमारी सरकार के समय भी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने भारत ने अन्य देशों के साथ मिलकर रखा था, जो विचाराधीन है अभी भी। हमने आतंकवाद के खिलाफ एक पूरा फैसला विश्व समुदाय की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से करने की बात की थी।
कन्वेंशन की बात की थी अगेंस्ट टेररिज्म, हम उस पर कायम हैं। समय समय पर भारत ने बात उठाई है, इस पे दो मत नहीं हो सकते। आतंकवाद का खतरा भारत को भी है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अन्य राष्ट्रों को भी है। उसमें किसी को भी व्यवधान और बाधा नहीं डालनी चाहिए। अभी हाल में भी जो सूची बननी है टेररिस्ट की, उसमें पाकिस्तान की भूमिका तो गलत रही है। पाकिस्तान को तमाम वो लोग कानून के हवाले कर देने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के, जो जिम्मेवार थे मुंबई पर आतंकवादी हमले के। और चीन को भी उनके बचाव में अपना वीटो का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसमें कोई विवाद नहीं है। और सही है कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऐसे संगठन और अपराधी संगठन उनका भी दुरुपयोग करते हैं। तो हर देश में, हर राज्य में, हर पुलिस संगठन, हर खुफिया विभाग इस चीज़ों को देखते हैं कि इनका दुरुपयोग ना हो, और उसके लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी होती है। The last question is to you, since you are a very seasoned leader of the nation and are a subject of foreign affairs also, how do you see the statement that Foreign Affairs Minister and the UNSC made today in the capital, in which he has seek the support of all the countries around the world to counter the global terrorism, as he has also categorically said that the new technology and the social media have become the important tool for the militants. So how do you see this? Well, India has been consistently raising this demand in the United Nations and other international forums. India had formally put forward a resolution and mobilized substantial support for it. Successive Indian governments have been impressing upon member states of the United Nations to have a global rule, a convention against terrorism. We would expect all countries to respect that, because terrorism poses a threat to India. We have faced the brunt over many decades, perhaps 3 decades. There are other countries which have been affected. I would not like to quantify, but across the board, in every continent, there have been acts of terror attacks. And surely they have access to resources, not only terrorist organizations, but also criminal organizations, those who drug syndicates. And therefore, a sharp watch is required, and action by the concerned institutions to prevent, or at least to checkmate, the misuse and abuse of technological resources which are at the disposal of the civil societies. And whatever preventive steps are required to check any abuse or misuse should always be put in place. It has to be globally coordinated, and I'm sure that this is being done.